Many students will be going further with respect to your ammeter and voltmeter concept. Okay. Students, is the audio and video fine with you all? Yes, sir. Okay. Now, students, when you speak about ammeter and voltmeter, students, this actually comes under the concept of working of a galvanometer, students. Students, my voice is cracking. Yes. Now, please cross check. Is the network fine, students? Can you hear me Yes. properly? Yes, sir. Okay, fine, students. Students will be going for your ammeter and voltmeter concept, students. Okay, you just refresh it again. Okay, students, ammeter and voltmeter are the two concepts which are actually considered to be a part of a galvanometer. Students, galvanometer was the first ever instrument which was put forward by physicists. Galvanometer was the first ever instrument which was put forward by physicists. Galvanometer is a highly sensitive device used to detect small or feeble current. Since galvanometer is a highly sensitive device and it is used to detect small or feeble current, students. यानी सबसे पहले फिजिसिस्ट ने जो इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था स्टूडेंट्स वो गैल्वेनोमीटर था. वो करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट था, ना कि मेजरिंग था. It was current detecting instrument and used to detect small या feeble current. छोटा अगर थोड़ा भी करंट होता है ना सर्किट के अंदर वो तुरंत डिफ्लेक्शन दिखाता है. That is for small current. The pointer shows large deflection. यानी थोड़े अगर थोड़ा करंट भी जब भेजते तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा देता था. That is what is your galvanometer, students. Galvanometer को कैसे कनेक्ट किया था? It's always connected in series. Galvanometer is connected in series in an electric circuit. This is what a student should keep in mind. यहाँ पे जो तुम्हारा galvanometer students तेरा ये दो टाइप के होता है, यानी based on the scale students. Scaling कैसे होता है उनका? यानी एक होता है galvanometer जिसको हम बोलते हैं centrally zero. यानी तेरा कुछ divisions right hand side में होंगे और कुछ लेफ्ट हैंड साइड में. ये सेंट्रली जीरो galvanometer होगा. और दूसरा होता है 1 and 0. It's like this. दो टाइप की galvanometers होते हैं students. ये सिर्फ उनका स्केलिंग चेंज किया गया है. एक है सेंट्रली जीरो और एक 1 and 0 भी कर सकता.
लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग गैल्वेनोमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने कंसिडर किया था, गेटिंग इट? और माय डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग है, working of the galvanometer, students, you'll be learning it in the next chapter, magnetic effect of electric current, students. वहां पे तुम पढ़ोगे working of a galvanometer, students. Okay, students. From galvanometer, there were two instruments which were put forward. Galvanometer means you got two different instruments. One was called to be as ammeter, and other one was called to be a voltmeter. Symbolically, हम ammeter और voltmeter को ऐसे दिखाते हैं, students. Why the students are coming to their own comforts? I don't understand that. Okay, students, ध्यान से सुनना. So galvanometer में से दो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बनाते हैं, एक है एमीटर और दूसरा है वोल्टमीटर, स्टूडेंट्स. अब ये एमीटर है क्या? एमीटर, स्टूडेंट्स, इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल आर, इन एम्पियर. ये ध्यान में रखना, ये इसका यूनिट है. और ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट. यानी ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर है. नाउ ये एमीटर गैल्वेनोमीटर से बनता है, तो ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. अगर मुझे करंट मेजर करना है, स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना, this device will have its own resistance. स्टूडेंट्स, एमीटर में भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो एमीटर बनता किससे है? कॉपर वायर्स अंदर होते हैं, तो वायर होगा तो रेजिस्टेंस तो होगा, लेकिन फिर भी वो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. तो व्हाट इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस? Your electric current, students, and resistance is inversely proportional. ये ध्यान रखना. Your current and resistance is inversely proportional, students. यानी ये एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा. तभी जाके एमीटर को बोलते हैं, स्टूडेंट्स, इट्स अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर. ये ध्यान में रखना. यानी एमीटर बनता किससे? गैल्वेनोमीटर से बनता है. It's made from galvanometer only, लेकिन it is a low resistance galvanometer. Low resistance का मतलब क्या? It allows maximum current to flow through it. Is that clear? Likewise, if I happen to consider voltmeter, voltmeter is what? Voltmeter is a high resistance galvanometer. Now, what's the reason for this to be high? कोई बता सकता है? Why voltmeter is a high resistance galvanometer? What's the reason for it? Anybody can tell me? Students? Directly proportional to resistance. तो डायरेक्टली यहाँ पे भी इनवर्स ही है. इसका रेजिस्टेंस अगर हाई होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, तो उसमें से जो करंट जाएगा वो बहुत ही कम जाएगा, और हमें चाहिए वो कि कम करंट जाए. कितना करंट जाना चाहिए, स्टूडेंट्स? कितना करंट जाना चाहिए इस डिवाइस में? उतना ही जितना वो
पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके, बस सिर्फ डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए उसको करंट। स्टूडेंट्स ये सिंपली डिफ्लेक्शन चाहिए टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस, और ये कितना करंट फ्लो होना चाहिए इसलिए ये हो रहा है। तो ये है लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और ये है हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो स्टूडेंट्स व्हेनेवर समबडी आस्क यू, अगर सपोज किसी ने पूछा गिव मी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा? लिसन केयरफुली, आई स्पीक आउट द डिफरेंसेस स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। Ammeter is an electric instrument used to measure electric current flowing through a circuit in ampere. Voltmeter is an electric instrument used to measure electric potential difference in volt. That's the first point of difference, students. ध्यान से सुनना students. Second, ammeter is a low resistance galvanometer. Voltmeter is a high resistance galvanometer. तीसरा point, अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट देता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर को तुम कहाँ पे कनेक्ट करते हो? इफ आई गिव यू इन द सर्किट, एमीटर तुम कहाँ कनेक्ट करते हो? क्या उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, क्या उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो, कहाँ पे कनेक्ट करते हो? व्हाट इज द आंसर? Series सीरीज। सीरीज Series. किसको? सीरीज किसको? सीरीज टू द रेजिस्टेंस वायर। to the चिराग cell battery. एमीटर, चिराग एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज टू द रेजिस्टेंस वायर स्टूडेंट्स, सीरीज टू द मेन सर्किट, द रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर का मतलब क्या है? लोड। लोड स्टूडेंट्स, जो भी घर के अंदर डिवाइस है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, अ ट्यूबलाइट, अ सीलिंग फैन, अ बल्ब, अ टीवी सेट, ये सारे है क्या स्टूडेंट्स? ये सारे रेजिस्टर है, ये सारे फिक्स रेजिस्टेंस है। फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब उनको एक ऑप्टिमम करंट चाहिए। अगर तुम्हारी ट्यूबलाइट है घर के अंदर, वो एक फिक्स रेजिस्टेंस है, उसको एक ऑप्टिमम करंट चाहिए। करंट अगर कुछ ज्यादा चला गया उस ट्यूबलाइट के अंदर तो क्या होगा? तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? then tubelight will not it will glow brightly and will fuse off हो जाएगा। अगर करंट उससे कम गया तो what's going to happen in that case? In that case it will not glow itself only। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी एक ऑप्टिमम करंट की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। So now when I speak about it, ammeter is what? Ammeter is always connected in series. In series, then second, that's the third point. It's in series to the electric device we consider electric circuit. That means ammeter is connected in series to the resistance wire in an electric circuit. Voltmeter is connected parallel to the resistance wire in an electric circuit. That's just enough. Parallel to the resistance wire in an electric circuit. अगर suppose मैंने ideal ammeter के बारे में बात किया, ideal ammeter स्टूडेंट्स, ideal ammeter क्या होता है? Ideally ammeter है क्या? Low resistance galvanometer। लेकिन अगर मैं वो ideal ammeter के बारे में बात करूंगा, तो ideal ammeter students has zero resistance. An ideal voltmeter has resistance to infinity। लेकिन मैंने वर्ड क्या यूज किया? आइडियल। हम जो भी एमीटर वोल्टमीटर यूज करते हैं स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ में, वो आइडियल नहीं होते। आइडियल नहीं होते यानी कुछ रेजिस्टेंस होगा उनमें। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है। Are these 4 points clear with everyone? Students, are these 4 points clear to all the students? Yes, sir. Okay. Yes, Right now, I wanted to write down these 4 points. First, I wanted to put, because ये मैं erase करने वाला हूँ, put down this information, draw this diagram, put down these two. उसके बाद में मुझे चारों points चाहिए। अभी मैंने जानबूझ के मैंने चारों points बोले, लेकिन लिखे नहीं है। Let me see how many of you can write down correctly. और जो नहीं करेगा, सही बोलेगा, मैं भी दूसरों को पूछूंगा, उनको मैं निकाल रहा हूँ मैं क्लास में से। I'll remove them right now. चारों points मुझे सही तरीके से चाहिए। First complete this part, and then go for this. I'm over here only, nowhere going.
So Prajapati, Kishan, Vishek, be ready. Prerna, Dhara, Jivita, Janvi, Jizel, Karan, Push, Komal, Sharat, Shwet. Shwet, are you there? Shwet, kindly reply. Now he's with Mike. Initially was just inside it. Sanket, are you there, Sanket? Sanket, can you reply? Why are you so late? Huh? You came inside the lectures after 7:52. Shwet was inside the lectures before you, but without Mike. He was just dozing off. When I posted you are not there in the lectures, I'll throw you out. Shall I speak to your dad, Sanket? Can I call him up right now? Please be on time. Please, one who finishes first, let me know about the points of difference. Please, fast. Okay, students, shall we move ahead? Shall I ask now? Done? Four points of differences between ammeter and voltmeter, students. Yes, Shwet, can you answer, Shwet? Mala has done it. Shwet, can you answer? I'm waiting for you, Shwet. Can you unmute and answer?
Yes, Shwet, can you answer, Shwet? He's not answering at all. Yes, anybody else? Anybody else who has done it? Malav Joshi has covered. Yes, Malav, you answer, Malav. Malav, can you answer? Yes, sir. Bolo. Distinguish between Sir, ammeter and voltmeter. ammeter measures the current in ampere and voltmeter measures the electric potential difference in volt. Second point. Ammeter is a low resistance galvanometer and voltmeter is the high resistance galvanometer. Very good. Third point. Ammeter is connected in series with the appliance in an electric circuit, Okay. and voltmeter is connected in parallel to the appliance. But, rather than saying appliance, you should say ammeters connected in series in an electric circuit. Okay, ammeters connected in series to the resistance wire in electric circuit. Okay. Okay. And voltmeters connected in parallel to the resistance wire in an electric circuit. Okay. Yes, Gazafar and Chirag, both of them have answered. Okay, Shweta, I understand your network is, it happens. Okay, then last point, Malav. An ideal ammeter has zero resistance, and an ideal voltmeter has resistance which is infinite. Okay, absolutely correct. Absolutely correct. Good. Okay, students. So all the 4 points have been cleared. See, one thing, if I would have asked, many students wouldn't have answered. And if I had to remove the class out of 25 students, I could have removed out of the strength of how many? 27 students, I could have removed all 25 students. Just 4 students would have been there into the classroom. This is what the problem is. So now when see the points which have been put forward, Hitansh has put forward the points. Okay. Even Ghazafar is putting the points in that case. Chirag has put forward the point. I don't know about Nadev at all in that case. But Malav had given all the 4 points correct, students. So please, dhyan mein rakhna. Whenever you speak about ammeter and voltmeter, students, 4 points are very important, students. Which are the 4 points? Once again, I'm speaking about, students. Dhyan se sunna. Ammeter is an electric instrument used to measure electric current flowing through a conductor in ampere. Voltmeter is an electric instrument used to measure electric potential difference between 2 points of a current carrying conductor in volt, students. Okay. It doesn't matter. Second, we consider is ammeter. In an electric circuit, ammeter is always connected in series to the resistance wire. ये ध्यान रखना, series to the resistance wire होगा. Voltmeter is connected in parallel to the resistance wire. ये ध्यान में रखना, students. Third point, we consider ammeter is a low resistance galvanometer. Voltmeter is a high resistance galvanometer. Last but not the least point, we consider, students, an ideal ammeter has zero resistance and an ideal voltmeter has infinite resistance. This is very important for a student to understand. Now let us understand students, ध्यान से सुना, ये ammeter का resistance low होने की वजह से. Okay. Wait a minute. Thanks, Naidev, for doing it. Last time you responded very well. Okay, today also you're responding very well. Okay, students, now listen carefully. When you consider for ammeter and voltmeter, students, listen carefully. Okay. Now suppose if I say कि एक सर्किट में इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो ये कनेक्ट होता है सीरीज में, कनेक्ट होता है पैरेलल. ध्यान से सुना, students. A simple concept I'm trying to put forward, students. Now suppose if I happen to go for a bulb, let us say a bulb. Students, एक bulb है क्या? What exactly a bulb I'll consider will be? This I'll call as a load. इसको हम बोलते हैं load या एक fixed resistance. Agreed. This is what is my electric bulb. What I call this as? It is a load or a fixed resistance, or this is my main circuit.
दिस इज माई मेन रेजिस्टेंस वायर, ये ध्यान में रखना। अभी जो पूरा डायग्राम बनाऊंगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मेरा रेजिस्टर होगा। होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर सपोज मुझे बल्ब ग्लो कराना है और मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना करंट मेजर हो रहा है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर एन एमीटर हो गया। फिर यहाँ पे मेरा सेल होगा, ये हुआ मेरा की, एग्रीड, यानी मेरा इलेक्ट्रिक सेल, ये मेरा की, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसके अक्रॉस में क्या कनेक्ट करूंगा, तो बोलेगा सर यहाँ पे वोल्ट मीटर होगा, दैट इज पैरेलल, यानी ये पॉजिटिव तो ये एंड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो ये नेगेटिव। स्टूडेंट्स उसका मतलब अगर हम ध्यान से देखोगे तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस, is connected across the circuit, the that means across the resistance wire in an electric circuit, ये पूरा electric circuit है। ammeter is connected in series, यानी ammeter को you can connect it over here or over here or over here or over here, but not over here, not over here, ये ध्यान में रखना। now listen carefully, ध्यान से सुनना। जैसे मैं की को insert करता हूँ students, so can I say what kind of a circuit is this we consider? Students, is it an open circuit or closed circuit? Students क्या बोलोगे इसको तुम? When I insert the key students, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा। मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? Electrons flow from where to where? Already I've told you all these things. Charge, the current flowing through. Negative. No, my dear, negative, it's incorrect. Negative. Electrons flow from negative to positive. Students, conventional current is going to flow. What are you all doing, Gazafar? Gazafar is also given an incorrect answer. See, this is what is not doing chapters, not going to the chapter, just pushing yourself into the lectures, not reading it, creates lots of problems. ये तो easy question पूछ रहा हूँ, बच्चों का question पूछ रहा हूँ मैंने। Students, we are on the verge of completing the chapter. आज chapter complete हो जाएगा. So much things you have done it in this particular chapter. ये तो 9वीं का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, 9th का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये 12th का नहीं है, 9 11th का है। You're actually giving me a shocker, my dear. This is not done. I don't know, parents should actually sit beside you all in my lectures, and I want the parents should sit beside you all. हर एक स्टूडेंट के बाजू में either the mom or the dad should sit beside. At least that 1 hour in the morning hours, they should 7:30. They should also get up, take their tea, coffee, or newspaper, and they should sit beside you all. Every day they should sit. Then only things will get improvised into your studies. And the speaker should be kept on loud and clear. Friends, ये है इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। हम कन्वेंशनल करंट के बारे में बात कर रहे थे। कन्वेंशनल करंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा था। ये देखो, ये कन्वेंशनल करंट है, अभी देखो करंट जा रहा है। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? तुरंत तुम बोलोगे सर रेजिस्टेंस है। करंट और रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्स। इनवर्स यानी अगर एमीटर का रेजिस्टेंस कम है तो कहने से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। हाँ, यानी ये सेल, ध्यान से सुना, ये सेल कितना करंट ड्राइव कर रहा है? How much is the current is driven from the cell, students? How much is the current driven from the cell? अगर वो मुझे चाहिए, for that I'm going to connect an ammeter. An ammeter is connected in series for that. That will help you out to find out the current in this case. जैसे वो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ पे आ गया, तो ये जंक्शन आ गया। ये क्या है? ये जंक्शन है। जंक्शन आने के बाद ध्यान से सुनना, करंट डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स। करंट will decide, should I enter into the bulb or should I enter into the voltmeter? That means, should I enter into my load or should I enter into the voltmeter? Or should I enter into my fixed resistor or should I enter into my voltmeter? Compare the resistance. इन दोनों के बीच में resistance compare करो स्टूडेंट्स, किसका resistance ज्यादा है? तो मैंने क्या बोला, voltmeter has a high resistance. यानी अगर तुमने बल्ब कनेक्ट किया है, वोल्टमीटर कनेक्ट किया, दोनों का खुद का रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो सपोज अगर ये एमीटर
ये एमीटर 5 एम्पियर का करंट भेज रहा है, 5 में 4.999 एम्पियर इसमें जाएगा, 0.001 यहाँ पे जाकर सिर्फ उतना ही जाएगा बस। क्यों क्यों इतना कम करंट जा रहा है? क्योंकि सर ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो उसको कितना करंट चाहिए? इतना ही करंट चाहिए जितना ये नीडल को डिफ्लेक्शन हो सके बस। Is that clear? Only this much amount of it. Shwet, you can hear me? Shwet, you can hear me? Shwet? And Shwet, over here to me, when I'm looking at your bandwidth is showing me proper white colors. Okay? एकदम full fledged तेरा net दिखा रहा है, एकदम सही और strong दिखा रहा है तेरा net. Shwet? और श्रीराज तो अभी आए हैं। वेलकम श्रीराज, बहुत जल्दी आए श्रीराज। So students, do keep in mind, okay? So what exactly ammeter? Students, ammeter is a low resistance galvanometer, voltmeter is a high resistance. अभी ध्यान से सुनना। Suppose अगर मैंने ये दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया, चलो एमीटर हमेशा किस में होता है? सीरीज में होता है, वोल्टमीटर पैरेलल में। अभी सोचो सोचो कोई स्टूडेंट जिसको पता ही नहीं है फिजिक्स, वो एमीटर की जगह पे वोल्टमीटर बिठा देता है यहाँ पे, वोल्टमीटर को यहाँ पे बिठा दो, अभी क्या होगा? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इंस्टेड ऑफ एमीटर आई प्लेस अ वोल्टमीटर हो गया, क्या होगा बताओ? ऑफ कोर्स फिर बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि ये वोल्टमीटर खुद इतना हाई रेजिस्टेंस है, वो करंट को आगे भेजेगा ही नहीं, बल्ब तुम्हारा ग्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नो करंट विल फ्लो इनटू द बल्ब एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। अभी दूसरी बात, सपोज अगर वोल्टमीटर की जगह पे मैंने एमीटर डाल दिया, चलो यहाँ से मैंने एमीटर को निकाल के यहाँ पे डाल दिया, तो करंट तो जा रहा है, 5 एम्पियर यहाँ पे आया स्टूडेंट्स, 5 एम्पियर यहाँ पे आया। अभी मैंने एमीटर यहाँ पे लिया और ये बल्ब है, जैसे 5 एम्पियर यहाँ पे आएगा तो विल लेस करंट विल गो इनटू द एमीटर और मैक्सिमम करंट विल गो इनटू द एमीटर? Maximum. मैक्सिमम। तो बल्ब तुम्हारा ग्लो ही नहीं होगा, क्योंकि एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस Yes, क्लियर? yes. That's why ammeter is always connected in series and voltmeter is connected in parallel. Thank you, Nadeep. Friends, can I erase this part completely now? Yes, sir. देखो अभी जैसे ये थियरी कंप्लीट हुआ, now I'll be giving you mathematical formulas और फिर इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं। जिसको थियरी समझ में आएगा, जिसको मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ में आएंगे, that person will be able to do problems more easily. And my dear students, CET के अंदर इसकी प्रॉब्लम ज्यादा पूछता है। और ये कैसे प्रॉब्लम वाले, जिसको पहला प्रॉब्लम कनेक्ट हो गया ना स्टूडेंट, सही आने लगा ना, सारे प्रॉब्लम सही आने शुरू हो जाते। फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम अगर सही आना शुरू हो गया, you'll go through it very properly। लेकिन जो पहले प्रॉब्लम है दूसरे प्रॉब्लम में अटक गया, will all the time will be blocked in these kind of questions। इसलिए थियरी को समझना जरूरी था। Okay students, let me put forward now the mathematical relations। So I told you that is ammeter has its own resistance we consider, voltmeter has its own resistance we consider, galvanometer also has its own resistance to it। So the first ever instrument was a galvanometer। This is a galvanometer। Okay, ये जो G है इसको हम बोलेंगे galvano resistance, galvanometer resistance, and this is always in ohm।
Now, the potential difference across galvanometer can be given by the formula Vg is equal to G into Ig. ये ध्यान में रखना है, using your Ohm's law, students. V is equal to R into I. ये Vg क्या है? Potential difference of the galvanometer, students. G क्या है? Resistance of the galvanometer. Ig क्या है? Current in galvanometer. ये ध्यान में रखना, students. अभी यहाँ से हम दो इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे. एक होता है एमीटर, ओके, और दूसरा होगा वोल्टमीटर, स्टूडेंट्स. नाउ प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड द मैथमेटिकल फॉर्मूला. यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट्स, उसको अगर मुझे एमीटर में बनाना है, इसको अगर मुझे एमीटर में बनाना, तो मुझे करना क्या है? सर इसका रेजिस्टेंस कम करो, क्योंकि वो तो लो रेजिस्टेंस है. इसका रेजिस्टेंस आप कैसे कम करोगे? सर एक ऐसा करते हैं ना, और एक रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं. करेक्ट, वन मोर रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और उसको हम नाम दे देंगे शंट. ये जो डिवाइस तुम्हारा बन गया ना स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारा डिवाइस बन गया, ये होगा तुम्हारा एमीटर. स्टूडेंट्स, अगर तुमने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा, तो एमीटर लुक्स इन दिस मैनर, काइंड ऑफ अ ट्रेपीजियम. ये तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल, ये तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल होगा. और देखो, गैल्वेनोमीटर के साथ में मैंने और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं शंट. शंट है क्या स्टूडेंट्स? शंट इज अ लो रेजिस्टेंस connected in parallel to resistance of galvanometer. क्या ये क्लियर हुआ? यानी एक तो वो लो रेजिस्टेंस है, ऊपर से मैंने उसको पैरेलल भी कनेक्ट कर दिया. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करता हूं, तो क्या ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ता है या कम होता है स्टूडेंट्स? डिक्रीज होगा. फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. चलो, दो रेजिस्टेंस बना दिया स्टूडेंट्स, 3 ओम्स, ओके, और 3 ओम्स. मुझे बताओ दोनों का आंसर क्या होगा पैरेलल में? बोलोगे सर 1/RP 1/3 1/3 2/3. तो आरपी देखो कितना है, 1.5. स्टूडेंट्स देखो, ये 3 ओम्स था, मुझे फाइनल आंसर 1.5 मिला. हेलो, अगर सपोज मैंने और एक रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में ले लिया, तो क्या आंसर आएगा? 1/3 1/3 1/3 3/3. अरे ये तो 1 आया, 1.5 से भी कम आ गया, 1.5 से भी कम. और एक मैंने पैरेलल, देखो पैरेलल रेजिस्टेंस करता क्या है? ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का कम करता है. वही अगर मैंने सीरीज में लिया था 3 ओम्स, तो दोनों मिला के 6 ओम बनता है भाई, जो 3 ओम से ज्यादा है. और एक में रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, तो और भी बढ़ता है. दिस इज व्हाट द कांसेप्ट वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड. यानी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के साथ में अगर तुमने और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ओवरऑल जो सर्किट बनता है, उसको हम नाम दे देते हैं एमीटर. एंड देयरफॉर वी कॉल एमीटर एज व्हाट? Ammeter we can consider as a low resistance galvanometer, and this is a high resistance galvanometer. Now let us go for the formula. So यहाँ पे formula क्या होगा? So please pay attention for the mathematical relations, okay? So जो कि यहाँ से current flow हो रहा है, let us say the current flowing over here is capital I. जैसे करंट यहाँ पे फ्लो होगा स्टूडेंट्स, अगर ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, देखो ये करंट स्प्लिट अप हो जाएगा, है ना? कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, कुछ करंट शंट में जा रहा है. लेट अस से द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज Ig. अगर Ig इज अ करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो मुझे बताओ व्हाट इज द करंट इन द शंट? So what exactly the shunt current will be? What is the shunt current? -Ig. Very good. शंट करंट क्या हो जाएगा? I minus Ig, जिसको मैं Is भी लिख सकता हूँ. तो कैन आई राइट दिस इज Is आल्सो. दोनों रियूनाइट होके कैन आई गेट इट कैपिटल I बैक? यस. I enters, I comes out. ये क्लियर हुआ सबसे पहले? Now, how are these two are connected in parallel? In parallel, क्या common रहता है? Potential difference common रहता है, लेकिन current split हुआ. So now can I give the answer for current? So the total current flowing will be equal to current in the galvanometer plus current in the shunt we consider. Current in the galvanometer, current in the shunt we consider in this case.
Is that clear? Now, when I speak about in terms of your relation, we consider it to get your answer accordingly. Friends, if I happen to divide both the sides with respect to what IS we consider in that case. Okay, the total current is IG plus IS we consider in this case. So how do I go about with it? So simply we can go for your formula. Students, ये देखो IG into G, IS into S, है ना? That's the total resistance connected in parallel we can consider. ये तुम्हारा total current आ गया तुम्हारा. Can I use my Ohm's law in this case? Why not? I को मैं वैसे ही रखूंगा. Agreed. IG को मैंने वैसे ही रखा. IS को मैंने कैसे लिखा? Students, if in case if I happen to go for IS, what exactly I can consider? Can you write down this in terms of resistance of the shunt? Can I write down in terms of resistance of the shunt? Why not? How? Divide throughout by IG. Divide throughout by IG. Divide throughout by IG. अगर मैंने IG से cancel कर दिया तो देखो ये cancel हो गया. Students, are you getting it? What is the Yes, relation I'm sir. getting it? What I'm getting is, students, I upon IG. ध्यान से देखना students. I upon IG is equal to 1 plus IS upon IG. मुझे चाहिए what shunt should be connected. मुझे shunt का formula चाहिए students. Can anybody give me the formula for shunt? What shunt should be connected across? तो बताओ. Absolutely correct. हितांश कैसे आएगा? हितांश बताओ. बोलो कैसे आएगा students? ये देखो ना, ये आई इसको कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? ये देखो, ये आई अपॉन आई जी आया, ये तो वन आया. स्टूडेंट्स, ये आई इसको कैसे लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में तो सेम है, तो कहने से V is equal to R into I. तो I को कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? I को कैसे लिखोगे? I can be written in terms of what? V upon shunt. ये होगा V into G. पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो कहने से I upon IG is equal to 1 plus G by S. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला शंट का. स्टूडेंट्स, आ गया तुम्हारा फॉर्मूला शंट का. Is this clear? What did I do? मैंने I को क्या लिखा है? V by R. ये I को क्या लिखा है? V by R. We consider the voltage across the galvanometer and the voltage across the shunt will be the same because दोनों connected parallel है. V दोनों केस में same है. दोनों केस में V तुम्हारा same है in this case. Is this clear? Students, have you all understood this much? Yes, sir. Now if I try to rearrange to find out the shunt, तो देखो मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ मेरा. What exactly consider? G upon S students. तो क्या हो जाएगा? I minus IG upon IG. मुझे शंट चाहिए, तो G into IG upon I minus IG. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये एक फॉर्मूला शंट का हो गया. Agreed? Is it clear? Yes, sir. Now, how to make it more easier? Students, जब भी प्रॉब्लम्स करते हो ना स्टूडेंट्स, ये इतना सारा हमें रिमेम्बर नहीं करना है. We don't have to remember this thing. ये तुम्हारा तो वोल्टेज अक्रॉस द गैलोमीटर हो जाएगा. स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉब्लम्स करते हो तो इतना नहीं सॉल्व करना है. एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं तुम्हें देता हूँ, ध्यान से सुनना. हमेशा वो फॉर्मूला यूज करना टू गेट योर आंसर सो करेक्टली. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. Suppose if I say, listen carefully, suppose if I say the total current flowing into the device. So its total current flowing into the device is n times the current in the galvanometer. ये समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द डिवाइस इज n टाइम्स, यानी ये टोटल करंट डिवाइड होता है ना IG एंड IS में. लेकिन मैंने अज्यूम किया कि I is equal to n times IG. तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, what exactly n will be equal to I by IG. अभी can I substitute this back over here यहाँ पे n? तो क्या हुआ फॉर्मूला देखो, n is equal to 1 plus G by S. G by S is equal to n minus 1. S is equal to G upon n minus 1.
स्टूडेंट्स ये हुआ तुम्हारा फॉर्मूला। जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो टू फाइंड आउट लो रेजिस्टेंस शंट स्टूडेंट्स, तो हमेशा ये ब्लाइंडली यूज करना स्टूडेंट्स rather than going for these things। और ये निकालना हमेशा, ये पहले निकालना। ये देखो ये आई क्या है, टोटल करंट। ये कभी बनता है, हेलो स्टूडेंट्स, ये कभी बनेगा जब भी तुमने शंट को कनेक्ट कर दिया, तभी ये आई मिलेगा तुम्हें, नहीं तो नहीं मिलता। आईजी क्या है, सिर्फ तुम अगर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर लेते हो पहले, तो उसमें सिर्फ आईजी फ्लो करेगा। स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर तुम देखो तो सिर्फ आईजी फ्लो करेगा। यानी जब भी तुम प्रॉब्लम को रीड करोगे तो बहुत ध्यान से रीड करना, बहुत ध्यान से रीड करना। अगर वो पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में बताते हैं तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको तुम आईजी पकड़ना। फिर वो पूछेंगे, what shunt has to be connected in parallel so that it can show you a reading from 0 to 10 amperes. It will show a reading from 0 to 10 amperes. What shunt is connected? तो जो 10 amperes बनता है ना, वो कैपिटल आई हो जाएगा, क्योंकि शंट के बाद का वाला करंट दिया है। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, यानी sir. मैंने, मुझे पता ये सारे फॉर्मूलाज मैंने क्यों दिया है, ये सिंपल ओम्स लॉ के हिसाब से दिया है। देखो वापस मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक्स है स्टूडेंट्स। ये 10वीं का कंसेप्ट मैंने बता दिया। टोटल करंट इज आई जी प्लस आई एस डिवाइड बोथ साइड्स बाय आई जी। ये रिलेशन मिल गया मुझे। वी इज आर आई की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई अपॉन आई जी इज 1 प्लस जी बाय एस को ये फॉर्मूला लेके भी अभी देखो शंट निकाल दिया। शंट को एक तरफ कर दो, जी इंटू आई जी आई माइनस आई जी। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस चाहिए तो शंट को इस तरफ कर दो। अभी अभी किसी ने पूछा व्हाट इज जी इंटू आई जी, स्टूडेंट्स व्हाट इज जी इंटू आई जी, तो उसको हम क्या करेंगे, मैं वीजी भी डाल सकता हूँ, क्यों नहीं डाल सकता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज आई माइनस आई जी, इज शंट। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू वीजी अपॉन करंट इन द शंट। लेकिन स्टूडेंट्स ये सब रिमेंबर करने में बहुत बहुत तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस लगेंगे, इतने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने में बहुत। सिर्फ तुम क्या करो, आई इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो तुम्हारा एस क्या होगा, जी अपॉन एन। जब भी तुम ये याद रखोगे और ये याद रखोगे स्टूडेंट्स, और ये याद रखना 3 formulas 1 2 3, you will get all problems correct at the first attempt. Is this clear to all of you all? The formula for shunt is equal to g upon n minus 1 and this answer will be in ohms. Students क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. Okay, shall I erase it or you're copying it? Erase it. Done. Pardon, done? Very good, Yes. Nate. You're so fast. Yes, sir. Okay, now can you give me the answer for voltmeter की substitutes? High resistance. How do you get the answer for voltmeter? Chalo, you derive. I want the formula. Naidip has finished this fast. Now, Naidip, come on, answer. What should be the formula for high resistance? Derive. I want you to give me the formula for high resistance. Naidip, are you listening? Yes. Okay, answer. Nobody has to help us, students. Those who know the answer, you can post it directly to me, students. Come on fast. मुझे क्या चाहिए, students? Listen carefully, okay? मैंने क्या पूछा? I want you to give me a mathematical relation for high resistance in case of a voltmeter.
Tansh has put forward the answer. Tansh, give me in terms of small n. जैसे मैंने small n में दिया ना, वैसे for ammeter. Absolutely correct. Now you're correct. अब देखो तंश दोनों फॉर्मूला कैसे इजी रिमेम्बर हो सकता है ना. पहला वाला g/n-1 Yes, sir. और ये वाला तुम्हारा इजी हो गया. Yes, Nadeep, can you answer, Nadeep? If not, then I'll ask Hitansh. Nadeep, you have an answer? What? I can't derive it. Very good. Very good. You're laughing. I need to speak to your mom and dad both. Yes, Hitansh, bolo. Yes, sir. Let Ig be the current flowing through the galvanometer. So we can get voltmeter is equals to Ig into resistance plus Ig into galvanometer. So rearranging the equation, we get resistance is equals to V by Ig minus G. But when we put it in the factor of n, then the volt range is increased. Then we will show a resistance is equals to galvanometer into n minus 1. Very good. Where n is V by Vg. So nicely he put forward. अरे तुम अगर इसका एक्सपेरिमेंटल अगर इसका तुम डायग्राम बताओगे तो है क्या गैल्वेनोमीटर के साथ में स्टूडेंट्स हाउ टू अंडरस्टैंड. अगर मैं एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स ये जो मेरा डिवाइस अभी बन गया ना, ये मेरा वोल्टमीटर, ये तुम्हारा वोल्टमीटर है स्टूडेंट्स. यानी गैल्वेनोमीटर के साथ में अगर तुम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दोगे स्टूडेंट्स, तो वो तुम्हारा वोल्टमीटर बन जाता है. ये ध्यान में रखना, वोल्टमीटर ऐसे बनता है सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लेते हैं. मुझे ये वाला रेजिस्टेंस चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए. वहां पे हम लोग ने शंट निकाला था, यहाँ पे आर निकालते हैं. फर्क क्या है? अगर मैं बोलूँ कि करंट फ्लोइंग इन द डिवाइस इज आईजी, लेट अस से द करंट फ्लोइंग, ये करंट कांस्टेंट है. हाउ आर दीस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो द करंट रिमेंस कांस्टेंट. यानी अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द करंट इन द गैल्वेनोमीटर, आईजी. व्हाट इज द करंट इन रेजिस्टेंस, आईजी. क्या इतना क्लियर हुआ सबसे पहले? Yes, sir. Now अगर मैंने पूछा what is the total potential difference between these 2 points, students, the answer is now the total potential difference between these 2 points is the potential difference across the galvanometer plus potential difference across the resistance. Students, इसके पहले वाला जो हम लोग ने डिराइव किया था, वहां पे I को हम लोग ने लिया था ना, I is equal to IG plus IS, क्योंकि वहां पे करंट डिवाइड हो रहा था. यहाँ पे करंट तो सेम है, तो मैंने वोल्टेज के हिसाब से लिया. ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स स्टूडेंट्स, and that's the voltmeter. This is V. What is VG we consider in this case? VG, I'll keep it as it is. I gotta get VG if in case if I happen to consider what exactly VG I can consider. So this can be written in terms of IG into G को भी तुम लिख सकते हो. VR क्या होगा? IG into R also I can consider. Is this clear? Getting it, students? अभी ये मैं VG वैसे ही रखूंगा students. If in case if I happen to go for it, I'll try to go for VG as it is in this case. Now can I move further from here onwards? Why not? या तो मैं VG से डिवाइड करूं दोनों साइड and you can get your answer accordingly. तो देखो
V by Vg is equal to 1 plus Vr by Vg. Students, what is V by Vg? That becomes your factor n. Students, the answer is now the total potential difference across these 2 points will be n times Vg. ये ध्यान में रखना हमेशा. यानी V by Vg को क्या लिखूंगा? V by Vg को एक बार in terms of 10. ये 1 को वहां पे लेता हूं, -1. Agreed? Agreed, students? What is VR? What is VR? So this is Ig into capital R. What is Vg? Ig into G, because current is same. आ गया तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, ये एक्सप्रेशन लिया है, इसको मैंने डिवाइड बाय Vg कर दिया, बस खत्म हो गया. What is V by Vg is equal to n भी कंसीडर. 1 को उस तरफ ले लिया तो n-1. फिर मैंने सिंपल ओम्स लॉ यूज किया है. What is V? R into I. What is V? R into I. दोनों केस में Ig क्यों लिखा? रीजन क्या है? कि सर दोनों सीरीज में है, करंट कांस्टेंट है. करंट कांस्टेंट है स्टूडेंट्स. Ig को मैंने कैंसिल कर दिया. So now if somebody asks you, can you tell me what is the high resistance connected in series in the galvanometer? The high resistance is G bracket n-1. And what does n over here stands for? N is actually the fraction. Since n is a fraction of the potential difference across a galvanometer. Fraction of the total voltage across the voltage of the galvanometer we consider. So n is equal to V by Vg. ये ध्यान में रखना चाहिए. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Okay. Now shall I erase this part also? As if Nedip ने तो कॉपी कर ही लिया होगा. Students, can I erase it? Yes, sir. Okay. अब इसके प्रॉब्लम्स का, okay? And my dear students, जो ये समझा है उसी को प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. I can tell you very clearly. और जो सिर्फ मेमोराइज करके लिख के बैठा है will not get a single problem. They will struggle in solving it. Okay, students. Let's go for it. Now, students, a galvanometer has a resistance. Now, students, a galvanometer has a resistance of 100 ohms. Okay, a galvanometer has resistance of 100 ohms, and its full scale deflection. Its full scale deflection is 100 microampere. पूछा है, what shunt should be added? What shunt should be added so that the ammeter, has a range 0 to 10 milliamp. Hope the question is clear. Galvanometer has a resistance of 100 ohms. Its full scale deflection is 100 microampere. What shunt should be added so that the ammeter has a range 0 to 10 milliamp? Solve it. Get me the answer, students.
Yes, anybody? No, not proper. Madhav. Chirag is also getting it in that manner. What's the answer in decimal? Hitansh, what exactly you have done? None of the answers are correct. मैंने बोला था, I told you very clearly, you're not trying to understand the question properly. Shall I solve, students? Solve करूं मैं? So listen carefully. I'll solve you the question. The answer is one, students. Yes. Galvanometer has a resistance of 100 ohms, students. No, my dear. Incorrect. Galvanometer has a resistance of 100 ohms. Its full scale deflection is 100. अभी क्या तो मैंने ये पहला तो स्टेटमेंट क्या पता, उसके बाद में शंट पूछा है ना. तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी सर ये होगा मेरा जी. दूसरा इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया स्टूडेंट, तो ये होगा मेरा आईजी. माइक्रो एम्पियर करंट है स्टूडेंट्स. हाँ, अगर तुम्हें ये यूनिट ही नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ है तो फिर भूल जाओ.
शिफ्ट योरसेल्फ इनटू लोअर स्टैंडर्ड्स, और 9वीं 10वीं हम करते हैं, बाद में फिर 11 12 सोचेंगे। अगर यही नहीं समझ में आ रहा है कि म्यू है क्या, तो फॉरगेट अबाउट दैट। दिस इज करंट इन द गैल्वेनोमीटर। अभी पूछा शंट, इसको क्वेश्चन मार्क दिया है, सो दैट द एमीटर हैज अ रेंज, एमीटर हैज अ रेंज, यानी शंट को कनेक्ट करने के बाद में अभी मेरा डिवाइस एमीटर बनता है जिसमें रेंज मैक्सिमम लिखा होगा, तो ये मेरा कैपिटल आई हो जाएगा। अभी क्या है ना, सीधा फॉर्मूला, सो इजी। मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली एन, एन इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट एंटरिंग इनटू द गैल्वेनोमीटर। एन क्या है, आई अपॉन आई जी, शंट का क्वेश्चन है, तो एन क्या बन जाएगा, आई अपॉन आई जी। यही अगर क्वेश्चन वोल्ट मीटर का होता तो एन क्या होता, वी बाई वी जी होता। स्टूडेंट्स क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, हाँ sir. स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. galvanometer has a resistance of 100 ohms. मैं वापस में क्वेश्चन रीड करता हूँ स्टूडेंट्स। galvanometer has a resistance of 100 ohms. Its full scale deflection is 100 microampere. What shunt should be connected so that the ammeter has a range? So and so, खत्म हो गया, यही क्वेश्चन था। तुम ये नहीं बोल सकते सर आपने जो डेटा लिखा वो इनसफिशिएंट लिखा है, आपने स्टेटमेंट्स में नहीं किया, हमारे सामने क्वेश्चन पूरा नहीं आया इसलिए हम सॉल्व नहीं कर सके। ये सारे बहाने हैं नॉट टू गेट द आंसर्स। एंड आई वांट यू ऑल वेरी क्लियरली, जिस बंदे को फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको करेक्ट मिलेगा सारे प्रॉब्लम सही आएंगे। So now what exactly is I by IG we consider? I कितना दिया है सर, ये है 10 मिली एम्पियर, so 10 into 10 is -3। What is IG? IG क्या होगा 100 माइक्रो एम्पियर, तो 10 is to -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो ये क्या होगा सर, ऊपर होगा 10 is to -2, नीचे होगा 10 is to -4, ये -4 ऊपर चला जाएगा, तो what exactly n becomes 10 is to -2 plus 4, sir n becomes 100। आ गया n की वैल्यू, यानी स्टूडेंट्स current in the current in the main circuit is n times current in the galvanometer. That's how I get it in this case. अभी देखो ध्यान से तूने अभी मुझे चाहिए क्या, शंट का फॉर्मूला क्या था? Is it G into n-1 और G upon n-1? ये तुम्हारा फॉर्मूला शंट का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, देखो ना, सिर्फ मुझे n ढूंढना था बस। G कितना दिया है, 100 दिया है। Agreed? Is that clear students? Yes, sir. अरे तो 100.99 था ना स्टूडेंट्स? Very sorry. How many of you have got that answer? एक second. Chirag had got this answer, and Chirag only was the one who got the answer. Correct. Chirag, you only got the answer correct, isn't it? Yes, Chirag has only got the answer correct. And mind you, students, the answer given in your textbook we consider, don't consider that part of it. ये तुम्हारा, you can consider that. ये तुम्हारा decimal में answer उसमें लेके आया. Only 1% got the answer correct. Students, n-1 कितना होगा? 100 minus 1. What is the answer for 100 minus 1? जिसको तुम कैसे लिखोगे शंट? हाँ चिराग, क्या आंसर लिखा तुमने डेसिमल में? क्या आंसर लिखा? 1 point. चिराग, what answer you wrote it? 1 point. बोलो 0.1. That's your answer. Now is this clear to all of you students? सबको clear हुआ? Yes, sir. अभी second question है, please अभी now start getting the questions. Okay, please. आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके बाद में सारे प्रॉब्लम्स हम लोग करंट के जितना होगा उतना विल ट्राई टू वर्क आउट। पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम्स बहुत टफ होता है, यानी है इजी, लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो सारे गलत जाएंगे। तो वी आर कंप्लीटिंग दैट पार्ट आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि नेदी बहुत फास्ट है लिखने में। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो बोलते नहीं है कि हमको लिखना है कि मत नहीं लिखना, इसे रहने दो हमें, है ना? None of the students speak about that. Okay, let's come back. So next question, अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट? ओके, पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट। अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउज, what is the value of shunt resistance that allows 20% of main current?
that allows 20% of main current through a galvanometer? Through a galvanometer of 99 ohms. Students, question clear हुआ? What is the value of shunt resistance? क्या पूछा है? What is the value of shunt resistance that allows 20% of the main current through a galvanometer of 99 ohms? Solve this question. Come on. Yes, anybody, students, come on fast. Come on, Nupur, you're not answering at all. Himanshu, Malav has posted his answer. Dhara, 2 students have given the answer. Hitansh has given the answer. Correct. Very good, Hitansh. Hitansh is correct. Malav, decimals में थोड़ा सा mistake कर रहा है. Gazafar is correct. Hitansh is correct. Gazafar is correct. Chirag is correct. Malav थोड़ा decimal में देख, ध्यान दे. All are correct now. Very good. Hitansh is correct. Gazafar is correct. Chirag is correct. So the guys are doing really better. What about the girls? Malav, cross check your calculation. Yes, Malav is also correct. Very good. Anybody else, students? Anyone else wants to answer? Tami Sayed तो अभी आए. And I'm very thankful to Tami Sayed. अपनी फुर्सत से आए. उनको आके भी हुआ कुछ 20-25 मिनट हुआ होगा, लेकिन बहुत जल्दी आए. फिर भी आए तो जरूर. Yes, come on, the rest of them. Anybody? Sharaj, Shriraj, Prachi, Manasvi, Jizal, Janvi, Nede, Jivita, Dhara, Prerna, Abhishek, Kishan, Nupur, Krishna. Anybody? Very good. Nupur has got also answer. Very good. Nupur has got the answer. Hitansh has also got the answer. Okay, come on, Nupur. Can you answer, Nupur? कैसा आएगा solution इसका? Can you tell me?
Nupur, can you tell me how to go about the solution? मुझे n में चाहिए, n क्या फॉर्मूला चाहिए मुझे? Nupur, are you there? Can you hear me? Can you unmute? Okay, Malav, come on, Malav, you answer, Malav. Sir, हाँ, IG बोलो. is equals to 20% of I. Very good. See, they've given to you the current in the what should be shunt resistance that allows. And shunt, अगर तुम डालोगे, allows 20% of the main current. So IG is equal to 20% Upon 100 of current. यानी देखो IG 20. ये परसेंट का मतलब क्या? परसेंट, यानी पर सेंट. सेंट का मतलब 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. Students, Ig upon I is equal to 1 by 5. So what exactly n? I upon Ig, and that is equal to 5. Abhi, Malav? now G is equals to 99, which is given, and then we can apply the formula. And what's the formula? S is equals to G upon N minus 1. See, so fast ये formula लेके कितना fast होता है? Students, है आती ना? है ना? Yes, sir. Both fast. Yes. G is 99. We consider upon n कितना होगा तुम्हारा? N कितना होगा? 5. 5 minus 1. 5 minus. So this is 99 by 4. Your answer will be 24.75. Agree, students? Next question. Nupur, अगर मिलता है आंसर तो बोलो ना solution. Don't do like that. Okay, the next one. A galvanometer has a resistance of 25 ohms. So the galvanometer has a resistance of 25 ohms, and its full scale deflection current is full scale deflection current is. Okay, a galvanometer has a resistance of 25 ohms, and its full scale deflection current is 25 mu A. What resistance should be added to have a range? What resistance should be added to have range 0 to 10 volt? Students, is that clear? Is the question clear? Students? A galvanometer resistance of 25 ohms and its full scale deflection current is 25 mu A. What resistance should be added to have a range 0 to 10 volt? Students, क्या ये question clear हुआ सबको? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes, sir. Okay, abhi get the answer, please, and get it correct in the first attempt, all guys. And Nupur, try your best. Abhi solution dena, and I want in terms of small n only, formula in small n.
Yes, anyone? Almost correct, students. Almost correct. Hitanshi, पहला वाला वही है या it is in decimal still? Your answer is correct, but you have Sir, brought approximation. approximation. Correct then. It's absolutely correct. One student of quarter students. Himanshu, get me the answer fast. Yes, students, shall I solve it? First put forward his answer. Correct. Two students have got the answer right now. Dasafar and Hitansh. Come on, what about Himanshu? What about you? Malav, what about you? Chirag, what about you? Nupur, what about you? Okay, Dasafar, can you explain? Dasafar? Malav, nahi, incorrect है Malav. Dasafar, can you explain? He's not able to unmute himself. Okay. Malav, can you unmute Malav? Yes, sir. अभी आंसर सुन. Okay, you only answer. तेरा आंसर सही नहीं है लेकिन you'll be able to get it. आंसर सुनना अभी. मैं तेरे को question पूछता हूँ, you go on answering. Yes. Okay. The question is what exactly? No, a galvanometer has a resistance of 25 ohms. So मुझे ये बताइए 25 ohms है क्या? G है, Resistance G है, capital R है या S है? G. G. So galvanometer resistance, students, is given to us 25 ohms. And its full scale deflection current is, तो ये क्या है? I. किसका है? देख रहे गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 25 एंड इट्स फुल स्केल. उसका मतलब क्या? IG. हाँ, गैल्वेनोमीटर का करंट है. अभी तक मैंने उसको ना ही शंट, ना ही उसको एमीटर बना, ना ही इसको वोल्ट मीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम रीडिंग बिटवीन द लाइंस हैज टू बी टेकन केयर फॉर. इसलिए मैंने लिखा ना गैलोमीटर रेजिस्टेंस 25 एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तो आईजी Yes. कितना दिया है? 25 माइक्रो एम्पियर. एग्रीड? Yes. तो अगर तुम्हें जी मालूम है, आईजी दिया हुआ है. अभी क्या पूछा है? व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट. क्या ये क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से पूछा है या करंट के हिसाब से पूछा है? Current. अरे, टू हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट. Potential difference. Potential. लेट हिम आंसर ना. देखना, व्हाट रेजिस्टेंस हैज टू बी कनेक्टेड टू हैव अ रेंज 0 to 10 वोल्ट.
यानी तुम्हें ये पूछा ना क्या रेंज क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो तुम्हें ये रेंज मिलेगा। तो देखो ना 10 वोल्ट लिखा है, तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, वोल्ट मीटर के ऊपर पूछा गया है, एम मीटर। ये लास्ट स्टेटमेंट वोल्ट बताता है, मीटर। ये सबका ये यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो रहा है, तुम ढूंढ नहीं पाते हो कि पूछा क्या गया है। तो मुझे बताओ ये जो 10 वोल्ट है, इज इट वीजी, इज इट वीजी या वी? वीजी। वापस पूछ रहा हूँ, galvanometer is 25 ohms and its full scale deflection current is 25 microampere। ये जो 10 volts है वो इसके साथ में लिखा है having voltage 10 volt, या what resistance to be having it so that the range is that। ओके, वी। हाँ V, यानी ये समझना जरूरी, जब तक तुम ये नहीं समझोगे सारे प्रॉब्लम गलत जाने वाले हैं। यस सर। एग्री? तो V तुम्हें दिया है 10 वोल्ट। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। और मैंने क्लियरली प्रॉब्लम पूरा बोला हुआ था, इसलिए ये मत बताना कि ये मत बहाने बनाना कि सर आप सिर्फ स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट लिखते हो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स नहीं मिलते। नहीं, other students are getting it। और मैंने क्लियरली बोला है galvanometer resistance 25 ohms and its full scale deflection current is 25 microampere। what resistance you are going to connect to have range 0 to 10 volt। अरे तो 10 वोल्ट मुझे चाहिए, मुझे 10 वोल्ट का रेंज चाहिए, तो क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, तो वोल्टेज चाहिए, तो मुझे वोल्ट मीटर के हिसाब से जाना है। तो मेरे हाथ में वी है, जी है, आई जी है, वी जी नहीं मालूम, क्योंकि तुरंत तुम्हारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज? कैन गिव मी द फॉर्मूला? रेजिस्टेंस मालव आर का फॉर्मूला क्या होगा? जी इंटू एन माइनस वन। वेरी गुड, n माइनस वन। क्या जी तेरे हाथ में है? यस। n नहीं मालूम, n का n यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज n? वी वोल्ट मीटर अपॉन का, वी जी। वेरी गुड, v अपॉन वी जी। क्या तेरे हाथ में v है? यस। वी जी नहीं मालूम, वी जी को कैसे निकालेगा तू? आई जी इंटू जी। आ गया ना, v is equal to I into R। देखो दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स कैन डू इट। सॉरी, तो ये क्या होगा, 25 v is equal to I into R we consider, so we consider 25 625 माइक्रो वोल्ट। 10 raised to minus 6 we can consider। Agreed? यस। Solving it what exactly, पहले तो n निकालो, what is n we consider, v is equal to 10 upon vg 25 into 25, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 raised to 6, तो उसको मैं 100 लिखता हूँ, 100 लिखता हूँ, और ये 4 5 6 25 4 सा 25 4 सा, है ना स्टूडेंट्स? तो क्या आंसर आ रहा है? तो व्हाट्स आंसर यू गेटिंग इट फ्रॉम हियर? 16,000। कितना आ रहा है? 16,000। 16,000। आई गेटिंग इट। सो n इज इक्वल टू v by vg। 16,000 माइनस 1 कितना होगा? 15999। एंड टू g कितना दिया है? 25। 25। आई गेटिंग इट। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा ये बता? अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा? देखो उन्होंने क्या क्या मालूम है, जिसने सॉल्व किया उन्होंने क्या क्या मालूम है, उन्होंने देखो फॉर्मूला क्या दिया मालूम है, कैपिटल आर इज इक्वल टू जी कितना दिया है 25। ये अगर तुम देखोगे ना तो 16,000 माइनस 1, उन्होंने उसको क्या किया मालूम है, उसको 16,000 ही लिया है। क्या किया उन्होंने, 16,000 ही रखा है। 25 4 जार 100, 25 8 जार 200, 25 16 जार 400, उन्होंने 400 पकड़ के चला है उन्होंने। तब लेकर उन्होंने क्या आंसर लिखा मालूम है स्टूडेंट्स, 400 into 10 raised to 3, ये आंसर उन्होंने दिया है, और वो अप्रोक्सीमेशन से दिया है। लेकिन जब तुम 16,000 माइनस 9 लिखोगे तो 15,999 into 25, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो तुम्हारा आंसर होगा 399.975 into 10 raised to 3 ohms। और ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, तो ये वैल्यू तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा। हमेशा सॉल्व करोगे वोल्ट मीटर के ऊपर तो कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जब भी तुम एम मीटर के प्रॉब्लम्स करो तो शंट बहुत ही कम होना चाहिए, डेसिमल भी आ सकता है। और देखो ध्यान से देखो, अगर परफेक्ट करो तो 399, उन्होंने क्या बोला है 400 into 10 raised to 3, 10 raised to 3, answer is in ohms। Malav, is it clear now? यस सर। Can I erase Malav? यस।
Okay. Now see, 913 has happened. The strength was hardly 28-29 students. उसमें से भी अभी और 7-8 स्टूडेंट्स निकल गए. पेरेंट्स कोई पूछने वाले नहीं है ना? और अगर अविनाश सर का फोन जाएगा कि भाई क्यों जल्दी निकलते हो, तो रीजन क्या? नेटवर्क इश्यू. जब एग्जाम्स होगी, जब ऐसे प्रॉब्लम्स पूछेंगे, तभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो ब्लेम, है ना? ब्लेम गेम शुरू. दिस इज द प्रॉब्लम. Okay, students, next question. Now listen carefully, everyone. Please try to get it correct. Okay, all of y'all. Since a galvanometer has a resistance, galvanometer, मान लो अभी सही लेके आना, galvanometer has a resistance of 40 ohms and a current of 4 milliamperes needed for a full scale deflection. Current of 4 milliampere is needed for a full scale deflection. What is the resistance and how is to be connected to convert the galvanometer? What is the resistance to convert galvanometer? A, B. दो क्वेश्चंस पूछा. Galvanometer into an ammeter of 0.4 ampere range and into voltmeter of 0 to 0.5 volt range. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? वापस बोल रहा हूँ. Yes, sir. A galvanometer has a 40 ohm resistance. The current of 4 milliamperes is needed for a full scale deflection. What is the resistance to convert galvanometer into A, sorry, into यहाँ पे लिखा हुआ, into an ammeter of this, into voltmeter of this. और ये बहुत ही easy बना दिया है. Get me the answers. And please, maximum students try to solve this. Since कॉलेज में कौन सा चैप्टर शुरू हुआ इसके बाद में कुछ पता है? करंट के बाद में और कौन सा शुरू हुआ है? हाँ students, can you tell me? Are you listening, students? अच्छा, no idea. सर हमारा पोर्शन कभी खत्म होगा? तुम्हारा it will be done my dear before दिवाली हो जाएगा. जब मेरा मैग्नेटिज्म शुरू होगा और EMI नेक्स्ट क्लास में I will start with magnetism. दूसरा फिजिक्स कहाँ तक पहुंचा है स्टूडेंट्स? सर वेव्स चल रहा था. अच्छा, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव. यस सर. आज हम प्रॉब्लम कंप्लीट. नेक्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक स्टूडेंट्स. सर कौन सा चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म बोला?
सर कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिज्म। करंट के बाद वाला, करंट के बाद वाला। सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, वो वाला। यस यस, सर वो तो हो गया। कर दिया हम लोगों ने। यस सर। अच्छी। यस सर, 10th चैप्टर हो गया, 11th भी हो गया। एक सेकंड मुझे यार बताओ, तो पोर्शन तो फटाक से हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ, who's this, who's speaking? Chirag, you are saying it? सर हितांश here। Hitansh, please everybody, what is saying it? 10th चैप्टर भी हो गया है और 11th भी हो गया है। मैग्नेटिक मटेरियल्स ना, अरे हाँ 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 हाँ, ये सबसे पहले लिया था ना हम लोगों ने। यस सर। अच्छा, तुम्हें मैंने उसके नोट्स भी दिए थे, बाइफिकेशन भी दिया था, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और ये भी दिया था। ओह, गॉट इट। सो हम नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट्स ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हितांश, यस सर। you now update to ज्ञानेंद्र सर। करोगे अपडेट उनको? कौन से सर को सर? ज्ञानेंद्र सर, मालूम है ना? नो सर, आई डोंट नो हिम तो तुम्हारे साथ में कौन से सर इंटरेक्ट करते हैं? एक्चुअली। मैं अविनाश सर को अपडेट कर दूंगा। अभिनव सर। अविनाश सर। हाँ, तो अभिनव सर का तो अपडेट करेगा, तो उनको बोलना करके कि फिजिक्स टू में अपना भी देखो कौन सा चैप्टर हुआ है। इंडेक्स के हिसाब से मुझे बताओ प्लीज, क्लियर कर अभी मेरे साथ में। एक सेकंड। हाँ, सर ऑक्सीडेशन अभी बाकी है, आई थिंक सो। नहीं नहीं नहीं, मैं फिजिक्स टू की बात की, फिजिक्स वन ओम सर ले रहे हैं ना तुम्हारा। यस सर। हाँ, तो मैं फिजिक्स टू के हिसाब से जा रहा हूँ। मैं, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया 8 वाला, यस। 9th करंट आज हो जाएगा, एग्रीड। यस सर। 10th हो चुका है, 11th भी हो गया है। 12th भी हो गया है, 12th बाकी, 12th के नीचे वाले बाकी है ना अभी। यस, 12th और उसके बाद वाले। अच्छा, हम लोग ने सेमीकंडक्टर्स वगैरह नहीं किया, सेमीकंडक्टर्स वगैरह नो सर। 11th में भी? सर किया होगा तो पता नहीं, मैं एक्चुअली रेड हाउस में था पहले। ओके, फाइन फाइन फाइन, तो कोई बात नहीं, हम 12th के हिसाब से जाएंगे। तो उनको सर को ये बताना कि दवे सर के साथ में 8th हो गया है, 9th हो गया है, 10th हो गया है, 11th हो गया, अभी वो 12th शुरू करेंगे। ओके, यस सर। उतना अपडेट कर देना। गुड, थैंक्स टू इन्फॉर्म मी। Yes, how many of you have got the answer for this one? Oh, 5 posts have already come. Okay, Malav has put his answer. Malav, पहला वाला आंसर क्या आया तुम्हें? 40/99। बराबर है। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर गलत है माय डियर। Sir, I'll recheck. Yeah. Please, the rest of you will start solving fast. Get me the answer as fast as possible. Yes, Gazaf, for you. First answer is correct. What about the second answer? Sir, correct. Shall I solve, students? Solve कर दूं मैं? Yes. Now listen carefully, students. ध्यान से सुनना. Yes, Chirag. First answer is correct. Second answer में क्यों इतना टाइम लग रहा है? Students, galvanometer resistance दिया है 40 ohms and a current of 4 milliamperes needed for a full scale. Students, ये जो 4 milliamperes है, ये क्या है? ये IG हो जाएगा. So can you tell me what is VG? IG into G. IG कितना दिया है? 4 milliamperes. So 4/1000 into 40.
एग्रीड। तो ये कितना होगा, 1 0 कैंसिल हो गया तो कितने से 16/100 वोल्ट। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने VG निकाल दिया। अभी उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। व्हाट इज द रेंज, यानी व्हाट एक्जैक्टली आई इज गिवन टू अस 0.4 एम्पियर। हाउ मच इज IG स्टूडेंट्स? यहाँ पे IG कितना दिया है, 4 मिली एम्पियर्स। सो व्हाट इज N? I अपॉन IG। I कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल होगा तो स्टूडेंट्स N कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा? स्टूडेंट्स गेटिंग इट? देखो I कितना दिया है, आई वांट टू फॉर्म इनटू एन एम्मीटर तो 0.4 एम्पियर। IG कितना है, 4 मिली एम्पियर। कैन आई गेट N? यस। अभी क्या करना है, मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे सर, शंट फाइंड आउट करो। So what is shunt? Galvanometer resistance upon n-1. S is equal to G upon n-1. G कितना दिया? How much is G known to you? 40 upon 100 minus 1 यानी 99. Students, अगर मैं 40 upon 100 लेता तो 0.4 आता। अभी ये 40 upon 99 है। Agree students? What's my answer will be? 0.404. Are you getting it students? Students, क्या ये clear हुआ everyone? Yes, Yes, sir. अभी दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। Now let us go for voltmeter. वोल्टमीटर का रेंज क्या है स्टूडेंट्स? रेंज ये है, यानी ये क्या दिया तुम्हें V दिया है 0.54। VG कितना है हमने निकाल दिया। N क्या होगा स्टूडेंट्स, V by VG। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। V कितना है सर, 5 इंटू 10⁻⁻1। VG कितना दिया है सर, 16 इंटू 100 हो जाएगा। तो एक्जैक्टली N विल बी इक्वल टू, सर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 50/16 हो जाएगा। एग्रीड? Is this clear? yes, sir. Now if I happen to go for it, 25 and 8, what's the formula for high resistance? G into bracket n-1. How much is the galvanometer resistance given to you is 40 into 25/8 minus 1. So can I say 40, 25 minus 8 upon 8. 8 5s are 40. So 5 into, what is 25 minus 8 students? Now students, 17, so what's my answer? 17 5s are 85 ohms. 85. Did I get my answer? यानी अगर मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज माय हाई रेजिस्टेंस? माय हाई रेजिस्टेंस इज 85 ओम स्टूडेंट्स। अगर मुझे एम मीटर में चाहिए तो व्हाट शुड बी माय शंट रेजिस्टेंस? 0.4। देखो शंट कितना लो रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। स्टूडेंट्स क्या क्लियर हुआ दोनों क्वेश्चंस? Yes, sir. कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. नेक्स्ट वन। और इसके एमसीक्यूज भी पूछते हैं स्टूडेंट्स सीईटी में। ओके स्टूडेंट्स, now get to the answer of this. Okay, please pay attention now. The question is, students, a voltmeter has a voltmeter has a resistance. वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस, ओके, इज 100 ohms.
Students, the answer is now. Voltmeter has its own resistance 100 ohms. What will be its reading when it is connected across a cell? ये voltmeter को मैंने connect कर दिया across a cell. यानी potential difference कितना होगा ये पूछा गया, जिसका EMF है 2 volt and internal resistance 20 ohms. Question clear, students? A voltmeter has a resistance of 100 ohms. I want to find out the potential difference reading. EMF is 2 volt, internal resistance is 20 ohms. Anybody? Students, ये जो question है ना, ये question is not onto voltmeter or ammeter. ये simple straightforward question है, students. कुछ आंसर देखना students है क्या? सबसे पहले मुझे V चाहिए students, potential difference of this. तो इसको कैसे मिलेगा सर? V is equal to resistance of voltmeter into current. ये तुम्हें मालूम है, तुम्हें current नहीं मालूम ना? सिर्फ current निकाल दो. कैसे निकालोगे current? सर I is equal to E upon capital R plus small r. हो गया. देखो EMF दिया है, हाँ सर दिया है ना? क्या क्या ये रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है? हाँ सर. और वो सीरीज में है ना स्टूडेंट्स. वोल्टमीटर बनता किससे है? गैल्वेनोमीटर एंड हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो व्हाट इज द वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस उन्होंने दिया ना 100 ओम्स. ये 100 ओम्स ये दोनों का है स्टूडेंट्स. यानी गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस दोनों कनेक्ट करोगे तो वो दोनों मिला के ये 100 ओम्स आ गया. इंटर रेजिस्टेंस कितना दिया है? तो कैन आई गेट करंट 2 upon 120 यानी कैन आई से 1/60 एम्पियर्स. अभी देखो तुम्हें I मिल गया. कैन आई पुट इट बैक ओवर हियर? यस. व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 100. हाउ मच इज द करंट? व्हाट्स माय आंसर? 2 5s and 2 3s. What's my answer? 1.66. Sorry, 1.67 volt. Is this clear? आ गया 100 upon 60 students 5/3. हाँ students, clear हुआ? V is equal to R into I. Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. टोटल करंट फाइंड आउट करना है. E upon capital plus small r. ये आ गया. फिर करंट को यहाँ पे भेज दो. बस V is equal to R into I. ये हुआ तुम्हारा आंसर. Okay students. Next lecture will be going with electromagnetic induction. Is that clear? But still students consistently इसके formulas revise करते रहना. Is that clear? And try to crack questions. हम problems solve करेंगे इसके. Don't worry about that also. और problem solve करेंगे. I'm getting it in between. Okay? चलो bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, No, sir. Bye bye.